Okay, so today's topic would be thyroid and PCOS. Thyroid and PCOS both are hormonal issues. Naina, yes, you have something to say? Yeah, ma'am, actually, I just wanted to tell you something that this thyroid and PCO and yesterday's a topic also we already covered in Ayurveda section, ma'am. Okay, So it is what is my suggestion is to, because of still see we it is going to be, the classes is going to be finished, but still we don't have the clear idea of it. So I just want you to, we should all be focused on this thing, the diet and the nutritions again and again in a very simpler form. Today also I gave in the query that first what we should do, that we should get the clear idea about the normal man and woman whole day nutrition in one day. Okay, yeah. daily, on daily basis, and then we can modify it for the this I mean to say diabetic patient, or for the children, or for high this for hypertension patients, like that. So in that case, we'll have the clear idea about it, ma'am. So what I'm understanding, Naina, you're more focusing on the dietary aspect. You want a clarity on these things, right? I think majority of No, all no, who are, yeah, just they want, yeah. so I'm currently I'm trying to understand what you are trying to put. Yes, ma'am, yes, yeah. So, Naina, I would again like to know which course you have enrolled in for in Arogyam. This Ayurveda nutrition. 1 month course. Yes, ma'am. Okay. So, as you see the course outline, it is 1 month modern and Ayurveda nutrition, wherein we are covering the basic of a particular disease and we are covering the diet aspect also. But 100% in the entire lecture, we are not focusing in only diet. We are covering it as a whole disease. Yes, ma'am, क्यों you're right. होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डाइट में किसी को समझाते हैं, जैसे आज हम थायराइड करेंगे, एक प्रोग्रेशन होती है कि थायराइड हार्मोन रिलीज कैसे होता है, ब्रेन में स्टिमुलेशन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टिमुलेशन होती है, एक प्रोग्रेशन होती है. हर एक प्रोग्रेशन में अगर डेफिशिएंसी है, कैसे वो होती है, जैसे मैंने इंसुलिन का आपको बताया, ठीक है, डायबिटीज होती कैसे है, उसमें आप बेटर तरीके से एक डिजीज को हैंडल कर पाओगे. नाउ इफ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ डाइटरी एस्पेक्ट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से वो डिजीज बॉर्न हो रही है, we will not be able to anyways find the right solution to that. So in No, this one, I'm not telling like that, ma'am. I appreciate the design of the program, but the thing is, base is also not yet, very concrete. Still we have base as in all of us, what? we are having, I mean to say that when what happened कि आपने पहले जो chart दिया था उसके बाद में, then after some days you are telling you don't have to, you refer to this chart, you have to refer to this chart now, so that make us Can we name confused. those charts to be very precise, Naina, so that we can clarify the things more easily? Now my problem is, after at the ending of this session, I think very few days has left, but still I'm not having the clear concept. Supposing what is the protein daily intake should be there. What is the iron intake should be there. This is there for the normal person. Okay, then we can modify it. This is what I was doing. I'm enjoying it, and it is necessary. I agree with you, but apart from that, this thing also is very necessary, ma'am. Okay, let me come to that. Give me a second. And I have one suggestion that this is I like the design of the course, but you should make one chart like that. In that normal things should be mentioned. कि Here, इसका just इतना है a तो second. इतना I चाहिए. got your point. Nana, Yeah, listen to me, yeah, please. yeah. This is the chart I had shared with you. Yes. Yeah. So this It is is the, the chart. If you have, if you were present in the class, this is the chart for normal people, correct? yeah.
So the chart has been shared to you wherein the micronutrient requirements are listed, and it is very clearly I told you that macronutrients we will be calculating. So protein and carbohydrates we are not going to take from this chart. Other things all it is listed from 0 years of age till the age of 60 years. RDA have been shared with you. Normal person RDA have been shared with you. One thing, okay? Yeah, yeah. Now, second thing, macronutrient distribution I have clearly explained in the class. कैसे protein, carbs और fats calculate करने हैं. Coming back कि किसको कितना protein चाहिए. I'll just show you so that you know you can recall. Give me a moment, please. There were two classes wherein I have shown you how much protein we require. I'll just show you. One protein requirement we have done here in this according to the activity level. Okay, आप सिर्फ एक्टिविटी लेवल देख रहे हो, कैलकुलेट करना चाहते हो कितना प्रोटीन है, आपको ये चार्ट शेयर किया गया है. Second, in obesity class also, in diabetes class also, I have told हमें कितना % protein लेना है. Have I told? So Yeah, this yeah. requirement is for normal individuals जिन्हें कोई भी बीमारी नहीं है. जहां किसी को कोई medical issue है, every single topic today also in thyroid and PCOD I'm going to tell that in this condition how much proteins we are going to take, how much अगर हमें कोई micronutrients पे ध्यान देना है वो कौन से होंगे. जैसे डायबिटीज में मैंने क्लियरली बोला था देयर आर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से सेल सेंसिटाइज हो जाता है. I clearly mentioned the name of those nutrients and I also mentioned कि RDA हमें meet करना है, requirements increase नहीं है. So everything is very clear. So I think you have somewhere lost some connection. Nevertheless, it happens because course चल रहा है, थोड़े new चीजें आती है तो हम थोड़े से confuse हो जाते हैं. It is very good that you have put a question so that I can reintegrate that we have covered everything. In a manner जहां आपको थोड़े doubts हो रहे हैं. Now I again would want to understand. अभी कुछ आपको लग रहा है कि कहीं पे you are not understand. I will be happy to repeat that. Yeah, ma'am. Actually, the thing is, still that concept is not clear for me. Which And concept? what is my suggestion to you? Apart from this, the task should be given that आप अपना ये जो है एक है उसका weight इतना है, height इतना है, और इसका ये कोई नॉर्मल इंसान है तो आप उसका कैसे उसको इतना कैलोरी उसका weight इतना That लूज is a करना है. separate course, Nayana. In 1 month course, we are covering the basics. There are courses like diet planning courses or apprenticeship courses where we are giving these exposure. But the case study that you are talking about, case study is not a part of this course. In No, this but course, this is the one is course name is what, ma'am? The course name is diet and nutrition. And they have you are told that after understanding finishing about this, diet and nutrition, right? yeah, So after okay, so finishing, what I would like to say is, Nayana, I think you have some concerns. You can please ask, discuss your concerns with the admin department, because here we okay. are, because I would Yeah, like yeah, to I talk to know. you, but Yeah, we are ma'am, please taking carry on. time of other 50 students Yes, also. yes, yes, Okay, yes. I'll do so that. please I'll do that. discuss your concerns. I think they can get you a right option and a right answer Because can be I, find I out just wanted for to you. put one point, ma'am, that so many other people also ask you that by the end of this course, can we do it our own? You told, or yeah, surely you can do. You can make your own plan. You Yes, assured us that. So the absolutely. thing is, yeah, the thing is that, and this is not, this is diet and nutritionist means the full course. At the end of the course, we should have 1 month, the full idea. what do you expect? How much to be covered in 1 month's time, Naina? No, We no, can't this is run this like it. No, we have this to is, give ma'am, this quality is, course. see, I'm not telling you anything, I'm not blaming anything, but if it is a course, then at the end of the course we should do that, ma'am. This See, is only my point. individually you are not able to do probably, but other students are doing. Everybody, they all can do it.
See, I have been teaching here since 2 years, and I think everybody is able to do this. And I In give the this, freedom to my students that if you are planning the diets, I think yesterday also I told everybody to practice and share your things on the number from where you are getting links. I will be checking those things, but it is not a mandatory thing. Yesterday evening I said this thing to all of you, that please open your intuitive app and practice. And if you want something to be checked, if you are planning something और आप चाहते हो कि मैं वो चेक करूं, जिस नंबर से आपको लिंक आ रहा है आप उसमें अपना नाम लिख के भेज दीजिए. I will be happily checking and giving my feedback on whatever you have done. So let's so you now just tell Naina, me that just in this course, just what? Yeah, yeah, Naina, yeah. please let us take your query to admin, because we Okay, can't sure, be, sure. it will be a long discussion. And again, we would love to handle your doubts and your things which are not clarified, but individually. Okay, let's get back to the course for today. I just minimize the files. Too many have been opened. So just a brief, everything has been shared with you. If you are not going to practice, you are going to land up in a condition end में ये होगा अभी तक तो हमें कुछ आता ही नहीं है. I have been taking this course and I know where the loopholes are. You need to practice. आपको practical implications करनी होंगी. If the things are not mandatory, you have to do it there at your own end, because we are not school going children, we are all adults here. Okay, so please kindly open your apps and practice what we are teaching you. I have done exchange list. How many of you have tried to do the exchange list? Have anybody asked me, ma'am, I have done the exchange list and I want you to check that? I'm sure many of you would have not done it, and last में क्या होगा? Problems होंगी. Great, Kayan, you have done it. You can send it on the number you are getting the links from. I would be happy to check it. It is for everybody. Kayan, I'll come to your question later on, because already it is 5:20. We need to proceed with the class. All right. So we are going to do thyroid and PCOS today. Thyroid and PCOS are both hormonal issues, and these are reversible through diet and lifestyle. First of all, let us understand thyroid hota kya hai. Thyroid is a butterfly gland hair. It is right located here. Okay, so and it is a very important gland which is producing a very important hormone, which is a thyroxine hormone. This thyroxine hormone is important for metabolism. मेटाबॉलिज्म मतलब हमें जो बेसिक एनर्जी चाहिए नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी कैरी आउट करने के लिए. सो विच मीन्स हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में थायराइड हैज अ इम्पोर्टेंट रोल. So now if this thyroid gland, which is this butterfly gland, it is produced in excess of amount, then it is known as hyperthyroidism. उस केस में मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है and the person starts losing weight. And if this gland is producing very less hormone, then the condition is known as hypothyroidism, where the metabolism slows down dramatically and the person starts putting on weight. Okay, so thyroid karta kya hai? Thyroid has a very important function in the body. As I am telling you, it controls your metabolism. So what usually happens is there is a ब्रेन में हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. I'll just show you the picture here. So just try and see this picture. So this is the pituitary gland. Okay, hypothalamus इसको नॉक करता है, हार्मोन रिलीज करो, तो ये TRH रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फिर रिलीज करता है TSH. This is happening here. This TRH will do the knocking and फिर ये further TSH produce करेगा. Now this TSH will knock this thyroid gland. ये TSH यहाँ पे knocking करेगा और ये TSH में से फिर T4 produce होगा. T4 कहाँ पे produce होगा? Bloodstream में जाएगा. Calcitonin is a hormone that is produced along with T4.
Now in blood, when T4 goes, T4 has to get converted into T3. Okay, so now when TSH, TRH से TSH बना इस लेवल पे, if there is deficiency of protein, vitamin B2, vitamin C, then TSH आगे T4 को convert कर ही नहीं पाएगा, because अगर there is a deficiency of nutrients at this point, TSH proper signals thyroid gland को नहीं दे पाएगा, so T4 will not be produced. फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर वैल्यूज है विटामिन सी, B2 और प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में है हमारी डाइट में, फिर हमारा T4 प्रोड्यूस हो गया, बट एट दिस स्टेज T4 जहां पे प्रोड्यूस होता है, T4 टू T3 कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड है सिलेनियम, B12, जिंक, सिलेनियम, B12 एंड जिंक एंड मैग्नीशियम. ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेफिशिएंसी है बॉडी में तो T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं होगा जो लिवर में होता है, और अगर लिवर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है तो भी T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं होगा. सो इन दिस केस क्या होगा, TSH लेवल्स बिल्कुल ठीक होंगी पर T4 T3 लेवल्स ऑल्टर्ड होंगी. ओके, नाउ T3 टू की कन्वर्जन होनी है, T3 ने एनर्जी को कन्वर्जन करना है, which means now if you can just correlate, T3 will get inside the cell और T3 आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है. सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ T3 ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ग्लूकोज कन्वर्जन टू एनर्जी नहीं होगा. T3 होगा तो ग्लूकोज का होगा कन्वर्जन, और ये T4 टू T3 टू एनर्जी कन्वर्जन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन A एंड विटामिन D. If there is a deficiency of vitamin A and vitamin D, T3 will not be getting converted into energy. T3 will not be there to help in the energy metabolization. Okay, so coming on protein to 12, vitamin A, D, C, zinc, selenium, magnesium. ये vitamins और minerals important हैं proper thyroid metabolism में. कितनी अमाउंट चाहिए, RDA जितनी ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए. अगर हमारी आयोडीन ऑल्सो, ठीक है, आयोडीन भी थायराइड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट्स में ये चीजें लेंगे वी लैंड अप इन हाइपरथायरॉइडिज्म, अगर हम बहुत कम क्वांटिटीज में लेंगे वी लैंड अप इन हाइपोथायरॉइडिज्म. ओके, I'll be coming to your questions at the end. So we have discussed about this diagram and we have discussed about hypothyroidism and hyperthyroidism. Looking into the symptoms, hair loss is seen both in hypo and hyper. The person gets fatigue very easily. There are goitrogen formation because of iodine deficiency. One person may feel cold. hyperthyroidism में body temperature warm रहता है, hyper में हम ये hypo कर रहे हैं. Cholesterol levels increase. There is a chance of constipation, brittle nails, sore muscles, menstrual changes, weight gain, and slow heart rate. These are the symptoms for a person who has hypothyroidism. Also, अगर ये constipation बहुत ज़्यादा chronic है, और if there is diarrhea experienced by a thyroid patient, and these two conditions are very chronic, then there is another third kind of thyroid which is known as Hashimoto's. Hashimoto's एक autoimmune condition है which is as same as hypothyroidism. इसके सारे symptoms same होते हैं, the only thing is chronic constipation, chronic diarrhea, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है. So Hashimoto's में gut health को भी focus करना होता है. It is an autoimmune condition. ये reverse नहीं हो सकती. What? Hashimoto's. Okay. What causes thyroid disease? थायराइड होता क्यों है? नाउ हम अगर डाइट प्लान कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि थायराइड होने की वजह क्या है. अगर आपको वजह पता होगी आप उस हिसाब से डाइट प्लान करेंगे. अगर आपको वजह पता नहीं होगी तो आप कैसे डाइट प्लान करेंगे? किसी को हशीमोटोज है, आप हाइपोथायरॉयडिज्म की डाइट दे रहे हो, यस उनको फर्क पड़ेगा, बट द कंडीशन विल नेवर बी रिवर्स्ड. सिम्टम्स, अगर आप गट हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे तो आप थायराइडिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इन हशीमोटोज कंडीशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द
reason there is a problem. Once you know the reason, you will be able to suggest the solution. अगर आपको रीजन नहीं पता होगा, आप सॉल्यूशन सजेस्ट गलत करोगे, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे. So hypothyroidism conditions में we know one reason is thyroiditis, जहाँ पे inflammation होती है, swelling होती है thyroid gland में, जिसकी वजह से हार्मोन प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है. इस कंडीशन में वी हैव टू फोकस ऑन द इन्फ्लेमेशन पार्ट. एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हमें देनी होगी, हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स देने होंगे, जैसे कि गार्लिक, टर्मरिक, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. एंड वी नीड टू गो डीपर टू अंडरस्टैंड कितनी इन्फ्लेमेशन है. बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो वी नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन ऑल्सो. Second, Hashimoto's autoimmune condition है, and it can be inherited and it can be due to faulty lifestyle for a really long period of time. Postpartum thyroiditis usually pregnancy के बाद होता है, and it is a temporary condition. इसे हम easily reverse कर सकते हैं. Iodine deficiency पे जब हम आते हैं, आयोडीन नॉक करती है थायराइड ग्लैंड को, नरिश करती है ताकि थायराइड प्रोड्यूस हो सके, थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो सके. आयोडीन की जब कमी होगी तो थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा. आयोडीन जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगे तो थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा. सो हाइपरथायरॉयडिज्म इज वन इज ग्रेव्स कंडीशन व्हेन द ग्लैंड इज टू मच ओवर एक्टिव. नोड्यूल्स, हाइपरथायरॉइड ना, जो हमारा बटरफ्लाई ग्लैंड है उसमें नोड्यूल्स होती हैं. नोड्यूल्स में देयर इज व्हाट वी कैन से दे बिकम्स ओवर एक्टिव. उस थायराइड को हम टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर बोलते हैं. अगेन, जब नोड्यूल्स हैं तो हमें नोड्यूलर ट्रीटमेंट साथ साथ में मेडिसिन उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी. थायराइडाइटिस इज ओवर एक्टिव थायराइड, जो हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में भी किया था रीजन. एंड टू मच इनटेक ऑफ एक्सेसिव आयोडीन कैन लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें वेट ड्रॉप होने लग जाता है. नाउ इफ यू सी द सिम्टम्स, हेयर लॉस एंड nails is almost the same. Muscle cramp, weakness is there. Body temperature is warm in this case. There is nervousness, insomnia, depression, enlarged thyroid gland, heart rate increase हो जाती है और weight loss होना शुरू हो जाता है. How do we do the medical assessment for that? First thing is, हम उन्हें कौन से टेस्ट करवाने को बोलेंगे. इंटरप्रिटेशंस डॉक्टर्स करेंगे, बट हम टेस्ट जब वो एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, हमें वो रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए. सीआरपी फेरिटिन लेवल. सीआरपी फेरिटिन लेवल हमें इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है. ओके, अगर थायरोइडाइटिस है, एनी केस में वैल्यूज अप एंड डाउन होंगी अकॉर्डिंग टू हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए सीआरपी फेरिटिन लेवल्स चेक की जाती हैं. टीएसएच, T4, T3 इज चेक्ड यूजुअली. बहुत ज्यादा कभी कभी प्रॉब्लम होती है जब डॉक्टर सिर्फ टीएसएच करवा देते हैं. आई यूजुअली टेल द पेशेंट्स टू गेट द T4, T3 डन अगेन. टीएसएच से हम कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, हमें तीनों वैल्यूज चाहिए इन्फर के लिए. ओके, this is TPO and ATG test, which is anti-thyroid peroxidase, anti-thyroglobulin. इसे TPO ATG टेस्ट बोलते हैं. ये बेसिकली हैशिमोटोस के लिए किए जाते हैं. TPO ATG टेस्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, which are done to know whether hypothyroidism या Hashimoto है. Hashimoto में these will be the values increased. Vitamin D चेक किया जाता है इम्यून फंक्शंस के लिए. विटामिन डी डेफिशिएंसी हम चेक कर सकते हैं, बट हम बाकी विटामिन की डेफिशिएंसीज चेक नहीं कर सकते. वो हमें ऐप के थ्रू ही फाइंड आउट करनी पड़ती है करंट डाइट डाल के. सो दिस इज द ब्लड प्रोफाइल रीडिंग दैट वी कैन डू. ओके, नाउ before we go into the micronutrients, how much macros do we need? Macros in thyroid. तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस केस में वेट बढ़ता है तो हम 50, 20, 30%. आई एम हियर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू कार्ब, प्रोटीन एंड फैट.
ओके, सो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम 50%, 20%, 30% मैक्रोज लेते हैं, और वी कैन टेक 55, 15 एंड 30 ऑल्सो। हम थोड़े से कार्ब्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाइपर में it is same as weight gain, so we can take 60%, we can take 15 and 25, or we can take 65, 15 and 20, ठीक है, depend from person to person, but we will not be adding too much of simple sugars or simple carbs in the diet. Hashimoto's का same रहेगा, बट इस केस में देयर आर सर्टेन डाइटरी थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग, बिकॉज अगर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया है तो हमें उन चीजों पे भी, उनकी रिवर्सल पे भी फोकस करना होगा। दिस इज अबाउट मैक्रोस। माइक्रोस हमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने हैं, हमें आयोडीन की वैल्यूज ट्रैक रखनी है। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर हैविंग एडिक्वेट प्रोटीन, विटामिन सी, डी, ए is important. Then we have B2, B12, zinc, selenium, selenium, magnesium, magnesium. So these are the various micronutrients जिन्हें हमें RDA पे मीट करना है, ज्यादा नहीं लेना है, कम नहीं लेना है। Okay, then common for all the thyroid, whether it is hypo, hyper or Hashimoto's, we are going to avoid the soy products completely. Soy milk, soy bean, soy का tofu, soy का कोई भी product हम नहीं लेते हैं, because that goes against the production of thyroid hormone. Okay, then we avoid cruciferous vegetables in raw form. हम cruciferous vegetables ले सकते हैं, but properly cooked form में। cruciferous vegetables होते हैं गोभी की फैमिली, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, बॉक chow, ये सब cruciferous vegetables होते हैं, इनमें goitrogens होते हैं। Again they interfere with thyroid hormone metabolization and medicine के रोल में। So cruciferous vegetables अगर आप ले रहे हो, आप raw form में नहीं लोगे, आप उन्हें properly cooked करके ही लोगे। Then grapefruit juice or grapefruit as such, walnuts, coffee. There was one more thing I'll tell you when we go through the routines. ये आपको 4 hours after medicine लेना है, not before 4 hours. Like usually जब हम thyroid medicine लेते हैं वो early morning empty stomach लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेने के 4 घंटे तक ये चीजें हम कंज्यूम नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली ग्रेप फ्रूट जूस और ग्रेप फ्रूट एज सच, वॉलनट्स एंड कॉफी। यू कैन टेक इट इन द इवनिंग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन मेडिसिन के साथ ये चीजें इंटरफेयर करती हैं। So iodized salt, selenium, basically selenium, zinc, as I told you, ये T4 to T3 conversion में help करते हैं, B12 T4 to T3 conversion में help करता है, vitamin D3 to energy, and it boosts the immunity in case of autoimmune conditions. As I told you, soy products हम avoid करेंगे, cruciferous avoid करेंगे, grapefruit, coffee and foods which are containing soy and cotton seed, this we will be avoiding for 4 hours. Also जब हम Hashimoto's के condition में we see that the patient is having a relationship, positive relationship with celiac disease. celiac में क्या होता है, suppose ये आपका small intestine है, okay, small intestine में विलाइज होते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स में से लार्ज ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को भेजते हैं। नाउ इन सीलियाक कंडीशन ये इंजर्ड हो जाते हैं and the gap produces, so undigested food from small intestine goes directly into the bloodstream leading to diarrhea in most cases. So उस केस में अगर किसी को celiac होता है तो हम gluten foods completely avoid कर देते हैं। What are gluten foods?
Gluten foods are any food, wheat, wheat related products, जिसमें आपका दलिया आ जाएगा, मैदा, सूजी, wheat pasta, anything that is made from wheat is completely avoided. So what are the gluten free things that we can take? Gluten free things that we can take are, just a second, ragi, jowar, bajra, all the kinds of millets, all the kinds of rice, red rice, brown rice, white rice, oats, हम ये सब gluten free में ले सकते हैं. This is the sample diet plan for hypothyroidism. You start your day with lemon water with the medicine. Then you have complex carbs, a mid-morning meal, which usually should be a fruit. Then a proper lunch with salad, but no cruciferous vegetables in the raw form. Then you have post-lunch evening snacks. So small and frequent meals is what we follow. And weight loss अगर करना है तो weight loss की ही diet बनेगी. And then this thing is important, bedtime. This concoction is important, and this virgin coconut oil. There is no thyroid plan, whether it is hypo, whether it is hyper, which is made without this thing. Cold pressed virgin coconut oil आप early morning lemon water में भी half spoon डाल के ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं. This cold pressed virgin coconut oil is very nourishing for the thyroid gland, और ये reverse करने में बहुत ज़्यादा help करता है. So bedtime concoction, turmeric inflammation के लिए हम लेते हैं. Wherever there is inflammation chances, turmeric is the concoction that we are gonna take. Okay. So this is the plan for hyperthyroidism, more of like weight loss, but again सिर्फ हम soy products, cruciferous vegetables raw form में नहीं लेंगे. Usually hyperthyroidism में Hashimoto's का linkage नहीं होता है. Hypothyroidism में there are certain things that we need to avoid, which is basically too much of iodine, जो हमें vitamin supplements, milk and dairy products में से मिलता है. Tyrosine also is rich, found in milk and dairy products. So one thing, iodine हमें avoid करना है. Second thing, हमें tyrosine rich foods avoid करने हैं. So seafoods में भी iodine होता है. Herbal supplements का negative impact होता है. Too much, 1 cup of green tea, 2 cup of green tea is okay, but too much is not going to play good role here. एडिटिव्स वाले फूड्स नहीं लेने हैं. डाई, कलर डाइज जिसमें यूज होती हैं वो फूड्स नहीं लेने हैं. देन एग योक, एग रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर रिच इन आयोडीन एंड टायरोसिन बोथ, so we should be avoiding eggs in the hyperthyroidism diet. And soy products also we should be avoiding as they have isoflavones. Okay, so basically हमें too much tyrosine and iodized salt नहीं लेना है. आयुर्वेद में there are certain things that we can include. Amla, which is a great source of vitamin C. Banana, उसमें B6, fiber, vitamin C, manganese. It takes care of the cholesterol if it is increasing. It is antioxidant. It has wonderful symptoms to heal the neurological problems and thyroid gland. So hyper ho या hypo ho, best it is there in hyperthyroidism, but anybody can take it. Coconut in any form, coconut oil, desiccated coconut, coconut milk, किसी भी form में coconut under the, because coconut में saturated fats भी होते हैं. So we should be taking care कि हम moderate amounts में coconut ले. Coconut is a good source of medium chain fatty acids also. So 1 to 2 teaspoons हम virgin cold pressed coconut oil के ले सकते हैं. Breathing exercise, detoxification process, certain especially Trifala, अगर किसी को chronic constipation है, Shilajit, Brahmi, in case of Hashimoto's works very well. Arogya Vardhini Vati and all the Gugulus, they work really well in reversing the thyroid conditions. Yoga asanas में हम breathe in and breathe out पे ज्यादा focus करते हैं. So जब हम एक आसन कर रहे हैं, we breathe in, we breathe out, your focus should be here on the thyroid gland. That's really nourishes your thyroid gland. Coming on to the second topic, it is 5:40. Let me take the topic first and then I'll come to your questions.
तो पीसीओएस भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है विमेन में, जहां उनका मंथली पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं. दे स्टार्ट मिसिंग पीरियड्स फॉर 1 month 2 month, एंड देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इन दे हैव regular periods but they still have PCOS or PCOD. First understand PCOS और PCOD में difference क्या है. PCOS is rare condition, PCOD commonly देखा जाता है. PCOD में number of cysts ज्यादा होते हैं ओवरी में, this is more than 10. PCOS में number of cysts कम होते हैं. It is a hormonal endocrine disorder. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनका डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में. पीसीओडी इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन की वजह से ये होता है. सो कॉजेस कैन बी जेनेटिक इन बोथ द केसेस. लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ, पीसीओएस के कॉजेस हो सकते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन एंड टू मच ऑफ वेट गेन कैन बी द रीजन फॉर पीसीओडी. पीसीओएस को रिवर्स करना मुश्किल है, पीसीओडी को रिवर्स किया जा सकता है. प्रेगनेंसी इजीली कंसीव किया जा सकता है पीसीओडी में, पर पीसीओएस में कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सिस्ट को सर्जिकली हम पीसीओडी में रिमूव कर सकते हैं. तो व्हाट आर द साइंस ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी? साइंस यूजुअली रहते हैं. एक्सट्रीम स्टेजेस में देयर आर डिफरेंसेस. इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं बिकॉज देयर आर टू हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. इनकी इरेगुलरिटी अगर होती है तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन irregular periods, and periods can be elongated cycle, which means 28 की जगह 35 days 40 days बाद cycle आ रहा है, या 2-3 months cycle ही नहीं हो रहा है. Excess androgen, which means facial hair growth होने लग जाता है. Androgen is a male hormone जो females में ज्यादा produce होने लग जाता है. It can be genetic, it can be hereditary. और इस androgen की वजह से excessive hair loss और acne भी कभी-कभी हो जाते हैं ज्यादा. Polycystic ovaries में enlarged ovaries हो जाती है, and they have too much of follicles which are surrounding the eggs. Excess insulin, insulin obviously hormone है जो pancreas produce करता है sugar metabolization के लिए. अगर आपके cells resistant हो जाते हैं insulin के action को, blood sugar levels increase हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी body को ज्यादा insulin produce करना पड़ेगा. एक्सेस इंसुलिन अगर बॉडी प्रोड्यूस करेगी तो एंड्रोजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी. लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जब आपके इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब WBC व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम होता है. WBC आर आर प्रोटेक्टिव सेल, दे आर द सोल्जर्स, वो हमारी इम्यूनिटी को डिपिक्ट करते हैं. तो जब उनकी काउंट कम होती है तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो कॉम्प्लिकेशंस में द फीमेल विल नॉट बी एबल टू कंसीव, या जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाएगी, या मिसकैरेजेस हो जाएंगे, नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो डायग्नोसिस में बेसिकली हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल FSH और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन दोनों बेसिकली आपके साइकिल को रेगुलेट करते हैं. ऑल्सो GnRH, विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. हार्मोन अगेन आपकी बैलेंस मेंटेन करते हैं बिटवीन द टू साइकिल्स. टू साइकिल्स क्या होते हैं? हमारा अगर 28 डेज का साइकिल है तो फर्स्ट 14 days is one part of the cycle, next 14 days is another part of cycle. Then we also do blood profile related to the sugar levels, thyroid hormone, vitamin D levels, lipid profile. Also जब हम PCOS या PCOD डिटेक्ट करते हैं, the gynecologist conducts a ultrasound scanning also. So PCOS diet is more or less like a weight loss diet, because 90% PCOS female or PCOD females gain weight because of hormone imbalance. So weight loss diet percentage हम लेंगे 50, 20, 30% carbs
50% कार्ब्स, 20% प्रोटीन्स, 30% फैट्स, ज्यादा से ज्यादा हम 55 तक लेंगे, बिकॉज पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो वी विल बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वेट लॉस एंड डायबिटीज डाइट ओनली. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मोर फाइबर इन द डाइट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ रहा है तो वो उसे ट्रैप कर लेता है. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, ये सब हम अवॉइड करेंगे. So the only thing that we are going to take care is chromium. Remember diabetes के टाइम पे मैंने chromium का नाम mention किया था. If along with a set of vitamins and minerals, chromium was one mineral जिसकी अगर deficiency होगी तो cell will not be able to understand the knock. So chromium deficiency PCOS में भी नहीं होनी चाहिए. Also when we are planning a PCOS diet, जैसे thyroid diet में कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल के बिना वो डाइट इनकम्प्लीट है, वैसे पीसीओएस डाइट में या पीसीओडी डाइट में सीड साइक्लिंग थेरेपी के बिना वो डाइट इनकम्प्लीट है. ओके, सो व्हाट इज सीड साइक्लिंग थेरेपी? एज आई टोल्ड यू, द फीमेल साइकिल इज ऑफ 28 days यूजुअली. ठीक है, सो 1 to 14 days we will be having 1 teaspoon each of flax and pumpkin seed. What is happening? Just a second. Okay, and 15 to 28 days में हम 1 teaspoon each लेंगे sesame and sunflower seeds. Okay, now what is the timing? Best is अगर आप early morning लेते हो. How do we take it? You can take it in the powder form. Mix कर लो गर्म पानी में. You can उबालना नहीं है, पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करना है. You can take it as it is in the raw form. You can mix it in something and have it. आप दोनों सीड्स को एक ही टाइम पे ले सकते हो, आप दोनों को अलग अलग टाइम पे भी ले सकते हो. लाइक आपका फर्स्ट 14 डेज का चल रहा है, आप फ्लैक्स सीड सुबह ले लो, पंपकिन सीड शाम को ले लो. सो 1 day में आपने ये लेना है. Okay, continuing this thing for 3 months to 6 months, this proves to be very very beneficial in balancing the hormones. So ये आपकी डाइट का एक मेन पार्ट होना जरूरी है, PCOD या PCOS डाइट का. Without this the diet plan is incomplete. Reversal action is incomplete. Okay. So gluten and PCOS. Now it is not mandatory कि हमें PCOD डाइट में ग्लूटेन को अवॉइड करना है. कभी कभी ग्लूटेन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, अगर ग्लूटेन की वजह से वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो देयर इज सम हार्मोन इम्बैलेंस, हम ऑफ ग्लूटेन कभी कभी जा सकते हैं. बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि हमें ड्यूरिंग द PCOS डाइट ग्लूटेन फ्री डाइट ही लेनी है. हाँ, अगर किसी को सिलियक सेंसिटिव है, किसी को समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में इशू है और सिलियक है, तब हम डेफिनेटली ग्लूटेन फ्री जाएंगे. एंड इन केस अगर हम ग्लूटेन फ्री जाते हैं विदाउट सिलियक आल्सो, वी स्लोली कम बैक टू नॉर्मल आल्सो. Okay, gluten free I have told you which foods to go for. Soy products हम milk products हम go off कर सकते हैं. कभी कभी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से एक्ने प्रोलिफरेशन ज्यादा होती है. अगर एक्ने ज्यादा विच मीन्स एंड्रोजन ज्यादा है, तो हम मिल्क को अवॉइड करेंगे PCOD डाइट में. ओके, वी कैन हैव बटर मिल्क दो. Sugars also we should be avoiding because sugars एक inflammation को more aggravate करती हैं. Weight loss को लिए भी they are not beneficial. So sugars को हम avoid कर सकते हैं, but again there is no rule कि आप sugar ले नहीं सकते. Coming on to Ayurved. Ayurved में basically imbalance of कफ दोष होता है, जिसकी वजह से धातु भी अफेक्ट होते हैं. और जो PCOD में धातु अफेक्ट हो रहे हैं वो है रसा, मेधा, अर्तवा धातु. एंड मैनेजमेंट में आप डिटॉक्सिफिकेशन, फास्टिंग, एनीमा, पंचकर्मा, मसाजेस ये सब कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली यू कैन हैव शतावरी. शतावरी को हम क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं. इट इज वेरी बेनिफिशियल इन PCOS. त्रिफला, गुडुचि, सुंठी, ये सब आप ले सकते हैं.
and certain yoga asanas we can do, again focusing on your uterus health while you breathe in and breathe out. That was all about thyroid and PCOS for today. I'll just take the chat questions. Sudha, your question is eight exchange of carbs, like exchange of food. We will be clarifying this. Thank you, Rohan, for your comment. Thank you, Poonam, for your comment. Thank you, Nanit. Kayan, please share that if you have done that. So we have discussed, Amita, that there is some app that is working in Dubai and you can use that. I have made a diet plan for my brother who's diabetic. I'll share it with you later. Please let me know if it is appropriate. Absolutely, yes. You can share it. Just mention your name. That's why people having thyroid are not able to lose weight. Yes. Thyroid can be reversed. Hashimoto's cannot be reversed. Jitendra, your question is a little irrelevant to the topic of thyroid regarding the sperm count. सोयाबीन हम नहीं ले सकते थायराइड में. Yes, Brazil nut, macadamia, hazelnuts are good sources of selenium. I have soaked walnut after 30 minutes to 1 hour of having medicine. So should I avoid? You should take it only after 4 hours. If the thyroid patient come for weight loss, then we can give banana. If zinc and magnesium are deficient, definitely we can give banana, but you should make sure that you're giving it as mid-meal fruit, okay, and with seeds. Lemon water in morning is good for pitta dosha. You can clarify this thing with your Ayurveda teacher. 28 days is the correct period cycle. Can we take this 4 seed every day? अगर आपको PCOD या PCOS पे वर्क करना है तो आपको डे वाइज ही लेना है. Every day आप ले सकते हो, but when we are focusing on PCOD, then go with the seed cycling therapy. That will have better effect. Normal person can have Shatavari. Best time to get USG done is depending on your condition, and the gynecologist can assess you physically and then can let you know. Cold pressed coconut oil is good for normal individuals, yes. Normal reference values of PCOD hormone test, usually gynecologist आपको वो prescribe करते हैं. So whenever you will get a PCOD person की reports, उनमें gynecology की prescription लिखी हुई होगी. So you don't worry about that. Is egg allowed or not, and when to eat for Hashimoto's? We have talked about this. Thank you so much, Akanksha. Kayan, please ask your question. मैम सोया को जो सोयाबीन्स है वो कुक्ड खाए जा सकते हैं कि उनको बिल्कुल अवॉइड करना है? बिल्कुल अवॉइड करना है, किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते. ओके मैम. सेकंड क्वेश्चन, जो आपने बोला वॉलनट्स नहीं लेने हैं, तो आलमंड्स, मुनक्का, अंजीर वो भी नहीं ले सकते या उनको भी 4 आवर्स के बाद ही लेना है? नहीं, वो आप पहले ले सकते हैं. सिर्फ वॉलनट्स को आपने 4 आवर्स के बाद लेना है. ओके. और सेसमे सीड्स की जो पोटेंसी होती है दैट इज हॉट, तो समर में भी हम सेसमे सीड्स मेंशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट को? डेफिनेटली इंक्रीज योर वाटर इनटेक. 1 चम्मच से प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बट कुछ लोगों को अगर होती है तो फिर आप उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो. मैम देयर इज वन को अगर पर्टिकुलर किसी सीड से एलर्जी है तो ऑब्वियसली फिर वो हमें अवॉइड ही करनी होगी. ओके मैम. देयर इज नाउ लास्ट रिक्वेस्ट. मैंने अपने बनाए हैं, जैसे मेरे को कार्ब्स 201 चाहिए ग्राम्स, प्रोटीन मेरे को 100 ग्राम्स चाहिए और फैट्स मेरे को चाहिए 53.6 ग्राम्स. अब जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत ट्रबल आ रही है. मैंने बनाए हैं छोटे मोटे से, लेकिन मुझे प्रॉपर एक आप गाइडेंस दे सकते हो? कोई भी मतलब कार्ब्स या डेफिनेटली कयान, हम क्या करेंगे, हमारा कल को हमारा शायद मंडे या सैटरडे इंटरैक्टिव होगा. सो मंडे या सैटरडे, आई जस्ट टेल यू, कल वी आर टेकिंग अ कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का टॉपिक हम कर रहे हैं, तो मंडे को या सैटरडे को हमारा इंटरैक्टिव होगा. सो आई एम मेकिंग श्योर बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चंस, I pick up 2 or 3 of yours
मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी मैं एक्सचेंज लिस्ट बना के आपको दिखाऊंगी, हम क्लास में वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? या मैम थोड़ा सा ऐसे ना हमें थोड़ा इजी हो जाएगा करना थोड़ा सा। Definitely, that is, we are going to do that. Don't worry about that. ओके मैम, थैंक Okay. Sudha, please ask your question. या गुड आफ्टरनून मैम। मुझे ये पूछना था कि हाइपोथायराइड जो है वो पीसीओडी या पीसीओ से रिलेटेड है क्या? या फिर इनका टेस्ट हम कैसे, पीसीओडी का टेस्ट हम कैसे पता करेंगे ये हमारी बॉडी में पीसीओडी या पीसीओएस? आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको असेस करेंगे, वो आपके कुछ हार्मोन के टेस्ट करवाएंगे वो, और 99% एक अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करते हैं, तभी पता चलता है कि पीसीओएस या पीसीओडी है या नहीं है। तो हमें मतलब ऐसे नॉर्मली ये पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में पीसीओडी है? ऐसा नहीं, कुछ सिम्टम्स? सिम्टम्स में ये होगा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, या आपको एक्ने बिना मतलब से ज्यादा होने लग जाएंगे, या फेस पे हेयर होने लग जाएंगे। दीज आर फ्यू और अननेसेसरीली वेट गेन होने लग जाता है कभी कभी। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स। बट समटाइम्स मान लो कि किसी की ओवरी मतलब यूट्रस रिमूव कर दिया है और फिर पीसीओडी की सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उस समय पे फिर कैसे कर पता यूट्रस चलेगा? रिमूव होने के बाद पीसीओडी के सिम्टम्स नहीं दिख सकते। यूट्रस रिमूव होने के बाद ज्यादातर मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखते हैं। नहीं, समटाइम्स अभी रिसेंटली मुझे अभी पता चला कि मतलब मेरी फ्रेंड है, उनको ओवरी में है सिस्ट, क्योंकि यूट्रस रिमूव किया बट ओवरी स्टिल है ओवरीज में सिस्ट है, ठीक हाँ, है। तो फिर वो मतलब जनरली अपने को पता नहीं चलता, कुछ सिम्टम्स उतना दिखता नहीं है वेट गेन में भी कि तो ये एक बार आप उनका टेस्ट करवाने को बोल दो ना, बिकॉज ये सब सारी बातें जो होंगी ना सुधा, ये अजम्पशंस के बेसिस पे होंगी। हम एज अ पर्सन सिम्टम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि कुछ पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स को पीरियड्स रेगुलर होते हैं, कोई राइट। सिम्टम नहीं होता है, बट समटाइम्स वन ऑफ द थिंग टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है। सो यहाँ पे अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो अजम्पशंस के बेसिस पे कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज टू बी सपोर्टेड विद अ रिपोर्ट, बिकॉज बॉडी के अंदर क्या हो रहा है हम बातों से उसे कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, थैंक यू। यस नैना, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, ma'am, you just now told about the seeds, no? We have to take the seeds. Seed cycling, yes. Yeah, and the PCO. But the thing is, sometimes what happen that all this kind of symptoms are seen in the person, but when they go through the checkup, the hormonal, नहीं आता है this PCOD, hormones, yeah, but it is not there. It is Yeah. not there, but all the symptoms are there. Yeah. The So hair, in that case, yeah. the reports are not showing, but the symptoms are here. We continue with the same therapy जो हमने PCOD के बारे में की है. Now see, symptoms are there, but reports are saying कि नहीं है. I would suggest कि हम दोबारा reports करवाएं after 2 to 3 months, and उसके बाद till 2 to 3 months we are not going to go here and there. हम डाइट पे फोकस करेंगे. अब PCOD की डाइट जो है, अगर हम वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो वो एक हेल्दी डाइट ही है। अगर हम गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहे हैं, गुड प्रोटीन्स ले रहे हैं, गुड फैट्स ले रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं ले रहे और सीड साइक्लिंग कर रहे हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है हमें। अच्छा, So अच्छा, what मगर मेरा usually happens, ओके, कैरी ऑन मैम। ठीक है। सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इज, कभी कभी ये सिंपल चीजें करने से हम रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स देख पाते हैं, बट इट इज नॉट ओवरनाइट. Symptoms are usually seen once you do a continuous thing for at least 21 to 41 days. उसके बाद हमें कुछ समझ में आता है कि हाँ हमारी बॉडी में हमें चेंजेस फील हो रहे हैं. हाँ, तो वो केस में हाँ, या मेडिकली इट इज मेंशन दैट इट इज she doesn't have PC or she doesn't have that, but in that case the remedy which you had given for the seeds, for 14 days, because of course the hormonal imbalance is there 100%. So in that case we can take that thing which you have Definitely we suggested. can take, Yeah. but alone seed cycling is not going to help. We need to focus on the entire diet along with seed cycling, along with good physical activity, everything. सिर्फ सीड साइक्लिंग से कुछ भी नहीं होगा, पूरी डाइट को 360 डिग्री से हम ध्यान देंगे, then we can see the reversal. Okay, so
जब हम किसी डिजीज मैनेजमेंट की या किसी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, सो 360 डिग्री में वी हैव टू फोकस डाइट, द एंटायर डाइट, वी हैव टू गेट द पर्सन मूविंग, सिडेंटरी लाइफस्टाइल से उन्हें एक स्टेप ऊपर आना है, दे नीड टू फोकस ऑन देयर स्लीप, दे शुड बी स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours, दे शुड बी हैविंग, अगर उनको स्ट्रेस इश्यूज हैं तो उन्हें वो ऑब्वियसली स्ट्रेस इश्यूज को हटा नहीं सकते, बट डीप ब्रीदिंग एंड अदर थिंग्स जो हमने कल भी डिस्कस की स्ट्रेस से रिलेटेड, वो इनकलकेट करेंगे, एंड वाटर इनटेक का ध्यान रखेंगे। जब हम ये पांचों चीजों का ध्यान रखेंगे तब हम किसी चीज को रिवर्स कर पाएंगे। सिर्फ डाइट या सिर्फ कोई एक चीज चेंज करने से रिवर्सल नहीं होगा। that is the three. But before you told me that this PCO, if it is not there, then we should not go for this thing which you have mentioned. No, we can go. There is no problem in taking seeds. I told कि किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम चारों सीड्स एक साथ ले सकते हैं, Okay, fine. डेज का साइकिल। द क्वेश्चन वाज क्या हम चारों सीड्स एक साथ ले सकते हैं। देयर आई सेड अगर आप पीसीओएस को ध्यान में रख के करना चाहते हो तो 2 सीड्स का ही साइकिल लो, अदरवाइज 4 सीड्स, यस यू कैन टेक इट इन अ डे, बट that is just a seed intake, but the seed cycling में there is a proper role of these seeds, वो 14 days और 14 days के interval में ही होता है, and specifically these seeds only. Okay, yes, thanks ma'am. Please ask your question. Most welcome, Naina. Individually you will get the certificates, Rajesh. Harnik Singh, please ask your question. Yes, good evening, ma'am. Good evening. Yes, I want to ask one thing. Animal milk and animal fat like chicken, mutton, beef have a food of animals mostly like a genetic modified food like soya bean and maize. Makkah, genetic makkah. That's because of these foods, the estrogen graph in milk and in other products will be increases. The increases of the estrogen due to the PCOD risk factor is increases, and thyroid is also that's why. Exactly, GMO foods. These are the #1 reason these days for more of hormonal issues. Pehle, we used to hear these cases kabhi. Cancer we used to hear once in a while, but now we are hearing these conditions more often, and to young people also. It is all because of the genetic modification of the foods that are happening. Okay, thanks. Then how we choose this animal and this like products, I mean to say milk and chicken, mutton and beef are not have a genetic modified food. Bakery so one should avoid, and if one person is taking, then one should be very careful of where the source is from. Okay, thanks ma'am. Priyanka, please ask your question. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो मेरा मतलब मेरा डेट अभी 22 या 23 को मतलब आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। तो मतलब मैम मैं अभी ये सीड्स ले सकती हूँ कि या जैसे ही अगर आप अभी कल से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कल से डे 1 के हिसाब से स्टार्ट कर दो। फिर जब आपके पीरियड स्टार्ट होंगे, लेट्स से आपके 25th को आ जाते हैं, कंसीडर 25th एज योर डे 1 एंड देन कंटिन्यू द साइकिल टिल डे 14 एंड फिर डे 15 पे सीड्स चेंज कर दो। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। एक्चुअली मैम मुझे ना मिसकैरेज हो गया, तो उसके बाद से मुझे ब्लीडिंग बहुत कम होने लगी। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को तो दिखा लिया, बट ऐसे कुछ बोले ही नहीं वो, तो मतलब मुझे क्या करना क्या चाहिए? होता है, ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं, ये एक हमारी यूट्रस लाइनिंग को थिक करते हैं, और जब हमारे पीरियड्स होते हैं अलोंग विद दिस यूट्रस लाइनिंग, जब ओव्यूलेशन शेड होती है, एग्स रिलीज होते हैं, तो ये यूट्रस लाइनिंग भी रिलीज होती है।
नाउ जब पीसीओएस होता है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स में इम्बैलेंस होता है तो यूट्रस लाइनिंग भी थिन हो जाती है कुछ केसेस में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। सो जब आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल्स मेंटेन हो जाएंगे तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो कंटिन्यू विद अ नॉर्मल डाइट। अगर आपका वेट ज्यादा है, वेट कम करो और सीड साइक्लिंग थेरेपी की हेल्प लो इन योर डाइट। ओके मैम, मेरा वेट वगैरह तो सब नॉर्मल है और मतलब हाँ, बट थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह योगा कर। इज वेरी हेल्पफुल इन रिवर्सिंग पीसीओएस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक Kiran, यू। please ask your question. Yes, ma'am. Ma'am, if we are using cold press oil, can we continue it or we can switch off? We In can some, continue it, but in limited amounts. uh, Okay, what because to means? cold press coconut oil की बात कर रहे हो ना, Kiran? Yes, 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 हाँ, so yes. cold press coconut oil, as I told you, has No, no, sorry, saturated coconut fats in oil, that. not groundnut oil, groundnut oil. Groundnut oil, हाँ, आप continue कर सकते हो. Okay. Okay, as per your fat requirements. Uzma, take your question. हेलो मैम। जी उज़मा। मैम अगर कोई मतलब 30 इयर्स की अनमैरिड वीमेन है जी। और मतलब उसका पीरियड मतलब इरेगुलर है, मतलब मंथ में 2 बार उसका साइकिल आ रहा है। ओके। तो मैम मतलब लॉन्ग टाइम से 5 इयर्स से मतलब गायनोलॉजी को दिखाया तो बोले कि आफ्टर मैरिज ठीक हो जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है पीसीओडी की वजह से या मतलब क्या हो सकता है? Yes, हो सकता है. It can be reversed. It can be getting better after some time. ओके ओके, थैंक यू। Yes, Kiran, please ask your question. मैम, जो आपने एंटीट्यूड ऐप जो दिया है उसमें एक ऑयल का मैंने सर्च किया, तो इसमें मुझे ग्राउंडनट ऑयल का सर्च करना था। तो उसमें एक ऑयल कॉर्न, पीनट एंड ऑलिव ऑयल का एक ही इसमें दिया है, तो वही कंटेंट हमें मतलब सभी इसमें वही कंटेंट आएगा, मतलब कॉर्न में भी वही, पीनट में भी वही और ऑलिव ऑयल में भी वही कंटेंट है? नहीं, वही कंटेंट मतलब you're talking about the composition of the fat. नो, यस यस। Composition वेरी करेगा ना. I will और take you उसमें through मैम the app. ग्राम में Wait, Kiran, I will take you through the app on the interactive class. ओके ठीक है, ओके। we'll और go मैम through उसमें ना that. ग्राम में दिया है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम लीटर में कैलकुलेशन करते हैं। ml में करते तो हैं, तो actually- ग्राम एंड ml में कन्वर्जन रेट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ओके ओके। और मैम Kiran, let's wind up. It is 6:08 now. I will take your question later on. I have another, following up things. So I will take your question next time, probably tomorrow. And thank you so much for the class. We can leave the class now.